Hello everyone, welcome back. Today I am here with the second part of medicinal plants. In this lecture I will discuss about the rest of medicinal plants which are given in our syllabus. In addition to that, I will also cover some other important medicinal plants. Firstly, today I will discuss about Rauvolfia serpentina, which is commonly known as serpentwood. It is an important member of family Apocynaceae. Its English name is Indian snakeroot. इसकी जो root होती है that gives an appearance of snake. And Indian names are, we have many Indian names like Chota Chand, then Dhawal Barua, Sarpgandhi in Hindi, and Sarpgandha in Sanskrit. So these are the names which are used in India. It belongs to family Apocynaceae. As I have already discussed, it is commonly known as serpentwood. The name Rauvolfia given to this genus because there was a scientist named as Plumier who assigned the name of Rauvolfia in honor of German physician Leonhard Rauwolf of Augsburg University in 1703. So जो Rauvolfia नाम दिया गया है, it is given as an honor to a person named as Leonhard Rauwolf. It is native to India. Then several species of this Rauvolfia are found to growing under different edaphoclimatic conditions in the humid tropics of India, Nepal, Burma, Thailand, Indonesia, Philippines, and Sri Lanka. In addition to that, in India, it is cultivated in the states like we have Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Orissa, Kerala, Assam, West Bengal, and Madhya Pradesh. Since in India it has become an endangered species because of its excessive exploitation, so government prohibited the exploitation of wild growing plants and its export since 1969 to prevent it from the urge of extinction. So facts about Rauvolfia. Next, if we talk about its external appearance, that is morphology. Rauvolfia serpentina is an erect, evergreen, perennial shrub which can reach up to a height of 15 to 45 centimeter. तो इसकी जो हाइट है ये अटेन कर सकता है 15 to 45 सेंटीमीटर की हाइट. If we talk about its root system is well developed and roots are tapering, branched and gives an appearance of snake. So root gives a serpent like appearance जिससे इसका नाम रखा गया है Sarpgandha, and this is the part used for preparation of medicine. These are greenish yellow externally, बाहर से greenish yellow है and pale yellow from inside. If we talk about its leaves, जो leaves हैं, they are simple. Leaves are simple, elliptical with pointed end. They may be ovate or lanceolate in and are present in the whorl of 3 to 4. और ये present होते हैं 3 to 4 के whorls में, means groups में present होते हैं. Then flowers are numerous and are borne on terminal or axillary cymos. So cymos inflorescence is visible in this photograph. जो terminal flowers हैं वो पहले open होंगे और जो नीचे वाले flowers हैं वो बाद में open होंगे. This type of inflorescence is known as cymos inflorescence. Corolla is tubular, tube shaped corolla present है, 5 lobed होता है, 1 to 3 centimeter इसकी length है and whitish pink in color. Stamens are 5 and are epipetalous. Epipetalous means it is a condition when stamens are fused with petals. So जो ये term indicate करता है fusion of stamens with petal. Next, it's a bicarpellary, means 2 carpels present है, connate है, style is filiform with large bifid stigma. Stigma is bifid. Fruit is drupe that we can see in this photograph. At its young stage, developing stage, it is green in color, but जब ये mature हो जाता है, it becomes purplish black in color at maturity, and it contains 1 to 2 ovoid wrinkled seed. और इसमें present होते हैं 1 से 2 wrinkled seed. So these are the morphological features of Rauvolfia serpentina.
Next comes chemical constituents. What are the various chemicals which are present in Rauvolfia root or bark? So root and bark contains many alkaloids, like we have reserpine, agemeline, agemelicine, and that is also known as raubacine, then agemelicine, rauvolicine, serpegine, serpentine, serpentinine, and dizerpidine. So these are some important chemical constituents जो medicines में use किए जाते हैं. In addition to this right hand side animated photograph shows various chemicals which are present in this root of Rauvolfia serpentina. Then part used is root that I have already discussed. Root को हम use करते हैं, और ये जो root की appearance है, it gives an appearance of snake, so that's why it is known as snake root plant. Next comes uses. So roots इसकी यूज की जाती है to cure hypertension. So Sarpgandha has sedative, means sleep inducing properties, anti hypertensive properties, stress को relieve करने के लिए, hypertension को remove करने के लिए, alleviate करने के लिए यूज होता है. Thus used for centuries to treat hypertension. तो hypertension को treat करने के लिए traditional Indian medicine में इसको यूज किया जाता है. How? So it also helps in lowering the blood pressure. So there are various uses of Sarpgandha. It is used as sedative to treat high blood pressure. Then reserpine, a group comprising serpine, then racinamine, deserpine, etc., acts as hypotensive, means tension को कम करने के लिए, sedative and tranquilizing agents. Now, isoprene, एक chemical component है that has a depressant action on central nervous system and produces sedation and lowers mood pressure. तो ये sleep induce करता है, जो हमारा nervous system उसको slow down करता है and induces sleep and lower the mood pressure. Then we have chemicals like agemeline, agemelicine, agemelinine, isoagemeline, etc. of the agemeline group. जो agemeline group है उसके जो chemicals हैं, they stimulate central nervous system, they act as a stimulating agents and increases respiration. Then serpentine, a group comprising of serpentine, serpentinine, then donine, etc. is mostly anti-hypertensive. तो ये टेंशन रिलीव करने के लिए, हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज़ होता है. सो मोस्टली जो सर्पगंधा है, इससे जो मेडिसिन बनती है, ये यूज़ होती है स्किज़ोफ्रेनिया और हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए. देन डिकॉक्शन, जो काढ़ा बनता है रूट से, इट इज़ एम्प्लॉयड टू इंक्रीज यूट्राइन कंट्रैक्शंस. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस हैं उनको इंक्रीज करने के लिए भी इसका डिकॉक्शन यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ रिकमेंडेड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. Next comes major Ayurvedic formulations which are made from the Sarpgandha. Like we have Bipacil tablets, then then we have Cardostab tablets. This is Bipacil tablets. Then we have Cardostab tablets and Somanas tablets, Sarpgandha, Ghanvati. ये यूज़ होती है. यहाँ पे ब्रेन का फोटोग्राफ भी बनाया है. इट मीन्स इट इज़ यूज एज अ एलिवेटिंग एजेंट फॉर हाइपरटेंशन. देन वी हैव साइलेडिन टैबलेट्स. सो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो बनती हैं सर्पगंधा से. The next plant which is given in our syllabus is Amblica officinalis, commonly known as आंवला. और इसका जो सिनोनिम है साइंटिफिक नेम का, दैट इज Phyllanthus amblica. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ फैमिली यूफोरबिएसी. और इसका जो प्लांट पार्ट यूज है दैट इज फ्रूट. वी यूज दिस फ्रूट एंड इट इज़ रिच इन विटामिन सी. सो इट्स सिनोनिम इज Phyllanthus amblica. इंग्लिश नेम इज myrobalan और आंवला. In India, we call it as by different names as Amla in Hindi, Amlika, Amla, and Amlaki in Sanskrit. Belongs to family Euphorbiaceae. Euphorbiaceae का member है ये, and it has its origin in tropical Southeastern Asia. It is also found in central and southern India, and Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Myanmar, etc. Then it is distributed in most tropical and subtropical countries including China, Indonesia, and the Malay Peninsula. So
डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट रीजन्स में, मोस्टली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है ये प्लांट, एंड वी यूज इट फॉर इट्स फ्रूट, और इसका जो फ्रूट है दैट इज रिच इन विटामिन सी दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. Next, if we talk about this external morphology, so it is a small to medium-sized deciduous tree which bear light gray color bark, and it gets exfoliated in small thin flakes. So अगर हम इसकी बात करें, it is a small to medium-sized tree है ये, और ये एक deciduous tree है. It means इसके जो leaves हैं winter में ये shed कर देता है. Its bark is light gray in color, and ये जो bark है ये निकलती है बाहर से thin flakes की form में, exfoliating in a small thin flakes. If we talk about its branchlets, जो branchlets है वो होती है alternate, और इस each branchlet bears hundreds of leaves which are arranged on this branchlet. And if we talk about its leaves are simple होते हैं, light green, pinnate, subsessile and appear along the branchlets. तो इसके जो लीव्स हैं सिंपल हैं, सिसाइल हैं, लाइट ग्रीन इन कलर है, एंड अपीयर अलोंग द ब्रांचलेट. फ्लावर्स आर ग्रीनिश येलो, फ्लावर्स इसके होते हैं ग्रीनिश येलो कलर के, इन एक्सिलरी क्लस्टर्ड, एंड इट बियर्स यूनिसेक्सुअल मेल न्यूमरस फ्लावर्स ऑन शॉर्ट सिलेंडर पेडिसल्स, वाइल फीमेल फ्यू फ्लावर्स आर फीमेल फ्लावर्स जो हैं सबसिसाइल, और इसमें जो ओवरी है दैट इज 3-celled, ओवरी इज 3-celled. Flowers start appearing in the beginning of spring season. इसमें जो flowers हैं वो appear होते हैं spring season में. Fruits are globose, fleshy, pale yellow with 6 obscure vertical furrows. तो इसमें 6 vertical furrows present होती हैं, enclosing greenish yellow seeds. और इसके अंदर present होती है greenish yellow seeds. Next comes the chemical constituents which are present in amla. So it contains quercetin, then camphorol, and we have gallic acid and allergic acid. So these are very important. In addition to this, we have this corylagin. So these are various important chemical constituents which are present in amla. Then it also contains tannins which provide bitterness to this fruit, and polyphenolic compounds like we have 1,3,6 trigalloyl glucoterchibine, then we have corylagin, allergic acid, then phylantidine and phylantine, terchibin, which are present in fruit and leaves. In addition to this, it contains vitamin C, then indole acetic acid, and it also contains some growth inhibitors. Part used, mostly we use the fruit, but we can use seed, fruit, leaves, bark, and roots also. Next, its uses. So there are various benefits of this amla. It is richest source of vitamin C, that is ascorbic acid. Then it supports healthy skin, it supports healthy immune system, it helps to maintain healthy heart, it helps to maintain healthy digestive system, it supports healthy eyes, it helps to maintain healthy hairs, so it is important component of hair oils. It also helps to maintain healthy glucose level in body. So there are various benefits of taking this amla. It cures rheumatoid arthritis. Arthritis को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं. Then it also prevent diabetes, indigestion, heartburn, balance वाता पित्ता कफ. So वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. It is one of the important component of त्रिफला. जो त्रिफला एक मेडिकेशन आती है, इसका एक important component है ये. It is used in dandruff and hair loss. Hair loss को ट्रीट करने के लिए, हेयर लॉस को ठीक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, मीन्स एंटी एजिंग है, विच हेल्प्स इन रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ कार्सिनोजेनिक सेल्स. सो कार्सिनोजेनिक सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है. इट इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ विटामिन सी. सिर्फ विटामिन सी का सोर्स नहीं है ये. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्लू एंड थ्रोट इन्फेक्शन. इसके अलावा ये इन डिजीज़ से भी हमें बचाता है. फ्रूट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, जॉइंटिस एंड इन्फ्लेमेशन. सो इसको हम यूज़ करते हैं इन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए. नेक्स्ट मेजर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऑफ आंवला, वी हैव अग्नितुंडी वटी which is prepared by using amla. Then we have amla ki churn, then amla ki rasayan, then brahma rasayan, brahmi amla tel,
सो ये सारी चीज़ें आंवला से बनती है। ब्रह्म रसायन फ्रेश फ्रूट पल्प इसमें यूज़ करते हैं। जो फ्रेश फ्रूट पल्प है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, मेन कंपोनेंट है। देन वी हैव च्यवनप्राश, उसका मेन इंग्रेडिएंट है ये, इसका पल्प। देन संजीवनी वटी। इन एडिशन टू दिस वी हैव आंवला कैंडी जो हम खा सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड अदर मिनरल्स। देन त्रिफला घृत, त्रिफला चूर्ण। सो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं टू प्रिवेंट इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। सो दीज आर सम मेजर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन विच आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग आंवला। Next important plant which is given in our syllabus is Catharanthus roseus, commonly known as Sadabahar. This is the photograph which shows this Catharanthus roseus. Its synonym is Vinca rosea. Then it is also named as Lochnera rosea. English name है इसके Cape Periwinkle, Rose Periwinkle and Rosy Periwinkle. Then Indian names are Sadabahar and Nitya Kalyan in Sanskrit. Family is Apocynaceae. Popular ornamental plant है ये and found in gardens and homes across the warmer plains of world. तो mostly ये warmer regions में पाया जाता है. It is also known as anti-cancerous drug. इससे important anti-cancerous drug मिलती है due to presence of some chemical components like vincristine, vinblastine. It is native to Indian Ocean island of Madagascar. Two common cultivars इसके यूज़ करते हैं. One is Catharanthus roseus. के दो cultivars हैं which is named as on the basis of their flower color. There is pink flowered rosea, जो pink flowered है rosea, and white flowers alba. तो दो इसके cultivars हैं. जो pink flower वाला cultivar है उसे बोलते हैं rosea और दूसरा जिसमें white flowers होते हैं that is known as alba. Next is external appearance. So it is an evergreen 1 meter tall herb. Herbaceous plant है ये. The leaves are oval to oblong, broad, glossy green, hairless, with a pale midrib, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, pale midrib, and a short petiole. Flowers are white to dark pink, with dark red at center. Center से ज़्यादा dark red होते हैं, with 2.5 to 3 centimeter long. ये इसकी length है. बेसल ट्यूब, इसकी जो बेसल ट्यूब है उसकी लेंथ है ये, एंड अ करोला अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. और इसका जो डायमीटर है दैट इज 2 to 5 सेंटीमीटर विद 5 पेटल लाइक लोब्स. द फ्रूट इज अ मैनी सीडेड सिलेंड्रिकल फॉलिकल. तो सिलेंड्रिकल फॉलिकल है इसमें. The chemical components or chemical constituents which are present in this Catharanthus roseus are vinblastine, vincristine, and vindolin, which are the very important anti-cancerous chemicals. The alkaloids which are present are vinblastine, vincristine, vindesine, vindolin, tabersonin, etc., and are mainly present in the aerial parts. ये present होते हैं aerial parts, that is the part above ground, where ajmelicine, then vincine and viniamine etc. which are present in the root or basal system. ये present होते हैं root or basal system में. In addition to this, this flower also contain chemicals which are rich in vinblastine, coronaridine, vindorosine, vindolin and rizerpine. So ये सारे chemicals present होते हैं इसके different plant parts में. So इसके लिए जो इसके plant part है, we use leaf, root and the whole plant also. Next comes uses. So Vinca rosea को हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट डायबिटीज़, और ये एक डायरेटिक और एंटी डायसेंट्रिक मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी हेलमेंटिक भी यूज़ करते हैं. मोस्टली इट इज़ एन एंटी कैंसरस ड्रग यील्डिंग प्लांट. जूस ऑफ लीव इज़ यूज्ड फॉर बी स्टिंग और वॉस्प स्टिंग ट्रीटमेंट. जो बी स्टिंग है या वॉस्प स्टिंग ट्रीटमेंट है उसके लिए यूज़ करते हैं इसके जूस, लीव का जूस. दैन डिकॉक्शन ऑफ लीव इज़ यूज्ड to treat diabetes, stomach cramps, and in intestinal parasitism. Crude leaf and root extract has anti-cancerous activity. Roots are used as purgative, means to clear the bowel, vermifuge, and toothache remedies. Next comes some other major drug yielding plants which are not given in our syllabus, but we should know about the basic information regarding these plants. Firstly, we have butch, commonly known as Acorus calamus. This is the photograph, Acorus calamus. It belongs to family Araceae. An active principle is beta acerone. Part used is rhizome. Underground इसका rhizome use करते हैं, that is similar to ginger.
यूजेस इसके हैं, इट इज़ एन एमिटिक विच मीन्स वॉमिटिंग कॉज करता है, नाउजिएंट है, एंटी स्पाज्मोटिक है, एक्सपेक्टोरेंट है और कार्मिनेटिव है. सो इसके बेनिफिट्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्वीट फ्लैग, दैट इज़ वचा. Maintains healthy stomach, helps in childbirth, fights depression, epilepsy and boosting memory, prevents infection, inflammation and pain, then prevent hair loss, and good for throat condition and speech. So इसका ऑयल भी बनता है, उसके भी बहुत सारे यूज़ हैं. Next comes onion or प्याज. Its botanical name is Allium cepa. It belongs to family Liliaceae. Part used is bulbs. मोस्टली हम इसका जो अंडरग्राउंड स्टेम वाला पोर्शन है वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ बल्ब. Bulbs are stimulant, diuretic, expectorant, rubefacient and aphrodisiac, which means they increase the sexual desire. Oil भी बनता है इसका, which is used as heart stimulant, reduce sugar, enhance hair growth. So health benefits: fight cancer, lower blood sugar, promote respiratory health, good for oral health, then enhance brain health, enhance eye health. Onions helps in good hair growth, prevent inflammation and other illnesses. Next comes garlic or lahasun. It is known as Allium sativum. It belongs to family Liliaceae. Part used bulbs, which are used in treating cough, hysteria and nervous afflictions. Juice is used in skin disease, earache and dyspepsia. So there are various benefits of garlic. It regulates blood sugar and blood pressure, strengthen immune system, prevent heart disease. It also helps in detoxification. It has anti-inflammatory properties, prevent and treat cold, improve bone health, lower cholesterol. It is antioxidant and anti-cancerous. It is also an aphrodisiac. Next is ashwagandha, which is Withania somnifera. Withania somnifera, family Solanaceae. An active principle is withanine, somniferine, tannic acid, flavonoid and amino acids. Part used is roots. Roots yield important drug useful in all type of skin lesions, ulcers, in rheumatic pain, inflammation of joints and paralytic conditions. इसके benefits हैं, it is helpful in reducing blood sugar level, improves bone health, it helps to fight cancer, improve thyroid function, increase muscle strength, lower cortisol, helps to reduce anxiety and stress, it boosts immunity. It is also a brain tonic. Next comes Shatawari, which is Asparagus racemosa, belongs to family Liliaceae. Part used roots, जो कि fasciculated roots होती हैं इसमें. These are used to treat diarrhea and dysentery. In addition to this, it also support female reproductive system, promote fertility, strengthen the uterus, helps to remove pathogen and other toxins, aids to digestion, means it helps increasing digestion, boosts the immune system, helps to regulate menstrual cycle. Then it helps to ease menopause symptoms and support healthy milk production in lactating mothers, helps to maintain normal hormone level, boost energy and strength. Next comes hing, which is Ferula asphoitida, which is a product of root exudate. Ferula asphoitida, family is Apiaceae. कोरिएंडर की फैमिली को बिलोंग करता है और इसका पार्ट यूज्ड है रूट एक्सिडेट, जो लेटेक्स है. रूट एक्सिडेट को यूज़ करते हैं. इज अ गम यूज्ड इन colic, dyspepsia, hysteria, cholera and indigestion. It is also used as spice. So ये इसका प्लांट प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं. It has various medicinal properties. Next comes neem, which is Adirecta indica. It is a member of family Meliaceae. Active principle is margocin and margosic acid. It is also known as margosa tree. जो नीम है उसे margosa tree भी कहा जाता है. It is used as an antiseptic, used for skin afflictions, abrasions, and also used to purify the blood and to remove ectoparasites and reduce hair fall. So anti-cancerous और anti-fertility properties हैं इसकी. insecticidal, anti-fidant और larvicidal properties हैं. antimicrobial है, anti-inflammatory है, anti-cancerous है. Then it is used as a fertilizer or pesticide in fields also, and it also used to protect our crops, so it acts as a pesticide also. Next comes salix, which is a willow tree. Willow tree, it is Salix alba, belongs to family Salicaceae. Active principle is salicin and acetyl salicylic acid, used as a painkiller. इससे जो drug बनती है that is aspirin. So aspirin बनती है इससे. Uses bark.
Next comes myobelin. Myobelin is the plant Terminalia chabula. It belongs to family Combretaceae. इसे commonly कहा जाता है हरड. Active principle chabulin, chabulagic and corylagin. Uses used to treat diseases that include dementia, constipation, and diabetes. It is the main ingredient in Ayurvedic formulation. Like we have Triphala, which is used for kidney and liver dysfunction. So the dried fruit is also used in Ayurveda as homeostatic, diuretic, and laxative. So इसके जो fruits हैं उसको use करते हैं. It helps in clearing eye, dark circles, immunity booster है ये, boost the mind power, memory, जो memory power है उसको increase करता है ये. And it is an important constituent of the major Ayurvedic formulation, that is Triphala. Next is Arjun, that is Terminalia arjuna, belongs to family Combretaceae. Genus is again Terminalia, family is Combretaceae. Part used is bark. It acts as a heart stimulant and is used to treatment of the cardiac disorders. जो heart से related disorders हैं उनको treat करने के लिए use करते हैं हम इसकी bark. So cardiotonic properties है. Since centuries से हम इसे use कर रहे हैं, proven by modern research also. The herb have been reported to work in ischemic heart disease and angina. तो हार्ट डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं. द पार्ट यूजेस बार्क. नेक्स्ट कम्स इसबगुल, दैट इज Plantago ovata and it belongs to family Plantagenaceae. Active principle highly branched polysaccharide called arabinoxylane. तो ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल है जो इसमें मेनली केमिकल कंपोनेंट है विच है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. यूजेस इट इज यूज टू ट्रीट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन. और इसमें हम यूज करते हैं सीड्स. डायरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, हेमोरॉइड्स को एंड हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. यूज टू ट्रीट स्किन इरिटेशंस, इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग आल्सो. सो इसबगुल का छिलका ट्रीटमेंट फ्रॉम इसबगुल क्योर्स एक्यूट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, नो साइड इफेक्ट्स, रेगुलेट ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंड एलिविएट और डिक्रीज और रिड्यूस हेमोरॉइडल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज बेल. इस botanical नेम इज एगल मार्मेलोस. इट बिलोंग्स टू फैमिली रूटेसी और इसमें हम यूज़ करते हैं फ्रूट. बिल पत्ते भी कहते हैं इसे. एक्टिव प्रिंसिपल इज मार्मेलोसिन, एसेंशियल ऑयल्स एंड टैनिक एसिड. It's fruit pulp. Fruit pulp is eaten as and it gives cooling effect against the digestive problems, used against chronic diarrhea and dysentery. तो बहुत सारे इसके बेनिफिट है. कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, लीव कॉन्स्टिपेशन, रिड्यूस स्किन रैश, इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क, प्योरीफाई ब्लड, कंट्रोल डायबिटीज, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड. Next plant is NUX-VOMICA. Its botanical name is Strychnos NUX-VOMICA. This is a frugivorous plant and the part uses seeds. Our seeds is a fruit. It contains seeds inside this fruit. It belongs to family Loganaceae. Active principle is strychnine and brucine. Part used, we use seeds, and it is used as nervous tonic and stimulate nervous system. यूज इन पैरालिसिस इन अ वेरी स्मॉल डोजेस. तो पैरालिसिस को ट्रीट करने के लिए भी इसका ऑयल यूज़ करते हैं. सो ये इसके सीड्स हैं एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट डाइजेशन प्रॉब्लम्स, नर्वस डिसऑर्डर्स एंड बोन रिलेटेड डिजीज. नेक्स्ट कम्स ओपियम, दैट इज Papaver somniferum, belongs to family Papaveraceae. And the active principles are morphine, codeine, papaverine and narcotine. और इसका हम पार्ट यूज़ करते हैं दिस अनराइप्ड कैप्सूल और इसमें छोटे छोटे इंसीजन बनाए जाते हैं जिससे ये लेटेक्स बाहर आता है और इसको यूज़ किया जाता है टू मेक मेडिसिन्स. सो यूज फॉर्मली यूज एज एन एनेस्थीसिया. पहले हम इसे एनेस्थीसिया पेन किलर की तरह यूज़ करते थे एंड सेडेटिव, बट इट इज़ ऑल्सो अ नार्कोटिक ड्रग, मीन्स इट्स एन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग. यूज टू रिलीव पेन. Antitussive है to treat cough. Then it is used to treat intestinal stomach spasm, respiratory spasm and asthma attacks. Used as hypertonic, sedative and astringent, antispasmodic. Diarrhea को treat करने के लिए यूज़ करते हैं. Relax involuntary muscles. और इसका जो poppy seed का oil है उसे यूज़ करते हैं for the vehicle for parentals. तेजपत्रा, that is Cinnamomum tamala, belongs to family Lauraceae. ये लीव्स हम यूज़ करते हैं. पार्ट यूज्ड लीव्स एंड यूजेस हैं इसके. लीव्स आर स्टिमुलेंट. इसको हम यूज़ करते हैं स्पाइसेस की तरह भी टू मेक टी आल्सो. एंड इज कार्मिनेटिव, मीन्स टू इंक्रीज टू क्लियर द बाउल, यूज्ड इन rheumatism,
कॉलिक एंड डायरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. सो ये लीव्स हैं, पार्ट यूज लीव्स जिनको हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम्स दालचीनी. सो जीनस इज अगेन सेम सिनेमोमम ज़ेलेनिकम. इट इज़ अगेन अ मेंबर ऑफ फैमिली लाउरेसी. इसमें हम यूज़ करते हैं बार्क. सो पार्ट यूज इज बार्क. यूजेस हैं इसके, इट इज़ यूज फॉर चेकिंग नाउजिया, वॉमिटिंग एज एन कॉन्डिमेंट. इसको हम यूज़ करते हैं टू एड फ्लेवर एंड अरोमा टू द फूड आइटम्स. बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं. पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, रेमेडीज फॉर टूथेक, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और ट्रीट वायरस इन्फेक्शंस, क्योर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़. दैन इट प्रिवेंट डायबिटीज़ टू. इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है. यूथफुल स्किन मीन स्किन को ये यंग रखता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ. नेक्स्ट प्लांट इज अक, दैट इज कैलोट्रोपिस प्रोसेरा. इट इज़ द मेंबर ऑफ फैमिली एस्क्लेपियडेसी विच इज़ कॉमनली नोन एज मिल्कवीड फैमिली. इसका पार्ट यूज़ करते हैं हम स्टेम लेटेक्स, और जो मिल्की लेटेक्स इट इज़ यूज टू ट्रीट लेप्रेसी एंड rheumatism. So it is an good anti-inflammatory in nature. Then it treat ear pain, cure diarrhea, treat toothache, hypoglycemic है इसका इफेक्ट. फुट ब्लिस्टर्स को ठीक करने में हेल्प करता है ये, और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ट्रीट स्किन डिजीजेस. सो इट इज़ यूज फॉर वेरियस डिजीज ट्रीटमेंट. नेक्स्ट कम्स रूसा, और इसको बोलते हैं वस्क भी, एंड इस बोटेनिकल नेम इज़ अडाथोरा बेसिका. इट इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली अकैंथेसी. सो इसको रूसा या वस्क बोलते हैं. पार्ट यूज्ड लीव्स को यूज़ करते हैं. इट कंटेन्स एल्कलॉइड वैक्सीन फ्रॉम लीव्स विच आर यूज टू ट्रीट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा. अस्थमा को ट्रीट करने के लिए इससे मेडिसिन बनती है अडाथोरा वेसिका से. सो इट प्रिवेंट्स कफिंग, रिड्यूसेस अस्थमा, क्योर साइनोसाइटिस, प्रोवाइड्स रिलीफ टू सोर थ्रॉट, गुड गट हेल्थ मेंटेन करता है, इफेक्टिव ऑन यूरेमा, reduce joint pains, cure ulcers, effective in curing bronchitis. Next is Belladona. Its botanical name is Atropa belladona. Family is Solanaceae. Part used leaves. It is used to treat various diseases, like we have antidote of opium poisoning. जो opium की poisoning है उसके लिए antidote की तरह काम करता है ये. It also helps in dilation of pupil. So pupil की dilation में भी ये help करता है. डेडली नाइटशेड बोलते हैं इसको, यूज टू डायलेट प्यूपिल्स. एट्रोपिन ब्लॉक्स ट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, तो नर्वस सिस्टम को भी स्लो डाउन करता है. नेक्स्ट दतूरा. इस बोटेनिकल नेम इज दतूरा स्टेमोनियम. इट इज अगेन मेंबर ऑफ फैमिली सोलेनेसी. पार्ट यूज लीव्स एंड सीड्स. यूजेज हैं इसके एंटीसेप्टिक है, एनोडाइन है एंड नार्कोटिक है. मीन्स इट्स ऑल्सो हैबिट फॉर्मिंग. जो रोस्टेड लीव्स हैं इसके, दे आर अप्लाइड टू बर्न्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ rheumatism को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं. Next plant is Brahmi. Botanical name is Bacopa moneri. It belongs to family Sacrophyllariaceae. Part used leaves. Uses हैं इसके, it act as heart stimulant and are dispensable in the treatment of many heart disease. It is also used to make brain tonic also. Brahmi. So cognitive boost and treat cognitive disease, boost immunity, improve skin immunity, ideal for patient of gout and arthritis, treatment of insomnia and deals with mental disorders, reduces blood sugar, treat epilepsies and respiratory benefits. Next comes Nirgundi. Its botanical name is Vitex nigundo. This is the photograph of plant. It belongs to family Verbinaceae. Part used leaves. Uses decoction इसका यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फीवर. काला ज्वर को ठीक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. So it has various health benefits, treating skin diseases, helps in digestion, treat menopausal symptoms, ease respiratory system, control PMS, then improve fertility level. Jamalgota, its botanical name is Croton tigalium. It belongs to family Euphorbiaceae. Part used are flowers. और ये एक इम्पॉर्टेंट परगेटिव है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ rheumatism, paralysis and used against painful afflictions of joints and limbs. So it is a strong purgative and act as a stimulant, laxative, and it is an irritant indicated in or used in case of severe constipation. और ये कुछ प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है. It has some side effect. It can cause severe abdominal cramp. Next comes Arandi, which is Ricinus communis. इसे डालडा भी बोलते हैं. So this is the photograph which shows this Ricinus communis. It is a member of family Euphorbiaceae. Part used are seeds. Its oil is extracted from the seeds and it uses purgative
then it act as a counter irritant and scorpion sting में भी इसको use करते हैं to get relief from scorpion sting. So it has various health benefits. Helps to treat rheumatism, benefits for new mothers. It helps in skin improvement, remedy for arthritis, effective against microbial infections, remove ringworms, advances hair growth, treats constipation, helps to reduce menstrual pain. So there are various uses of this oil obtained from seeds, and we use it for cooking also. This is the dalda vanspati ghee, which is obtained from the seeds of this Ricinus. Next is methi, that is fenugreek. Its botanical name is Trigonella foinum, that is fenugreek. It belongs to family Papilionaceae, that is the subfamily of Fabaceae. Part used are seeds. Seeds are diuretic and are given in dyspepsia, colic, and disorders of stomach. Fenugreek diabetes herb, so diabetes को control करने के लिए हम इसे use करते हैं. It has various uses. Next, bhang or hemp plant. Its botanical name is Cannabis sativa. This is the photograph which shows this hemp plant. It belongs to family Cannabinaceae. Part used are leaves or female inflorescence. Uses used as sedative, narcotic, used in dysentery, diarrhea, and indigestion. It has this active principle like we have tetrahydrocannabinol, which is very important chemical component, and cannabidiol, CBD. So these are two important chemical components of this hemp plant. Ganja is the dried flowering tops of female plant and its resinous extract is called charas. तो जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं गांजा, और जो एक्सट्रैक्ट निकलता है लीफ से, दैट इज कॉल्ड चरस. इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके सीड्स के. इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर वेलबींग, इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, इम्प्रूव स्किन हेल्थ, इम्प्रूविंग मसल मास, ट्रीट इंसोम्निया, प्रिवेंट colorectal cancer, assist in weight loss, regulate and balances hormones, prevents osteoporosis. So ये इसके बहुत सारे uses हैं. This medicinal plant topic is very vast topic. I have tried to cover some important plants which are given in our syllabus, as well as some important other plants which are not given in our syllabus directly, but they are very important from examination point of view. Hope you will get some idea from this presentation. If you have any questions, queries, and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day.